And I hope you all have received the presentation that I have shared on in your classroom. Have you all received it? Yes, ma'am. Fine, fine. Good, 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 good. सो ऑफ कोर्स उसमें कई ऐसी स्लाइड्स हैं जिसमें कि सिर्फ पिक्चर्स हैं आपकी, ठीक है, डेटा नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू कैन पैरेलल इट विथ द क्वेश्चन पेपर कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, एंड देन यू हैव टू पैरेलली कीप द बुक बिसाइड यू। वहाँ से उसमें आप और भी एग्जाम्पल्स वगैरह उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। So in that way, you can prepare for your for this subject. Anyways, I'll share the screen and then I'll discuss on something related to how we are supposed to answer the questions that I'm seeing, that I have observed that, okay, these type of questions are being asked in your question paper, okay? And when I will discuss about how you have to answer those questions, there will be I will discuss about certain other aspects also in general that will help you, not just answering this subject, but anywhere else also. Okay. Anyways, okay. So I'll first share the screen and finish this estuary ecosystem, and then I'll. Okay. A second. I hope my screen is visible, Vita. Yes, ma'am. Fine. So we had covered aquatic ecosystem yesterday, right? We have finished with the aquatic ecosystem, right? Okay. So we will now discuss about the last part in the aquatic ecosystem, that is your estuary. Okay. So first we have to understand what is actually an estuary. What is an estuary? So estuary is are the system when the river meets the sea, okay, or any freshwater source meets the sea. Okay. Now, so that now why is the studying that ecosystem is different, or how it is different from that of the marine ecosystem and that of a freshwater ecosystem? Because here the mixing of water is going to take place. And as a result of mixing of water, the salinity is entirely different. It's neither that of a fresh water nor that of a completely saline water. And also because it's the confluence part of both the marine organisms and the freshwater organisms. So they, during the course of evolution, they have made certain changes in terms of adaptation and modifications. Okay. So here is this picture. मैं इसे बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा, so that you can have a complete view. Okay, so you can see that this is a small stream and river, and there is actually a sea, and this entire region. ये तो बहुत छोटा सा part है, ठीक है? Means in order to give you an example and an image, so that it can create that image in your head. So यहाँ पर ये पानी की mixing हो रही है, तो definitely इस पानी का जो salinity level होगा, that will be very very different from that of a completely fresh water and that of a completely saline water body. Okay.
and therefore it also influences the type of vegetation and type of different animals or different species that are living in this ecosystem. Okay, and during the course of evolution, they had developed a certain adaptations and adaptive features in them so that they can thrive in this type of water. For example, in mangrove forest, you will see that they have the trees where the roots grow. There are the roots that grow against the gravity. They grow from inside the ground in the upward direction. Do you know about these roots? Do you have an idea about these roots? Do you have an idea about these roots, beta? Have you heard about such roots which can grow in the direction opposite to that of gravity? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, very good. Okay, and can anyone tell what these roots are known as? Ma'am, phototropic. Pardon, beta? Ma'am, phototropic कुछ था ऐसा. Okay, no. That is something different. Okay, ठीक है. तो I think you have a misunderstood my. I think I'll show you a picture and then probably you will be able to understand it. Okay, I've copied a picture. Okay, अच्छा किसी का painting आया था. पहले मैं उसको entry दे दूँ. कौन था मैं यहाँ पे? Okay, so let me put this here. Okay, so I'll just show this new slide so that you will have an idea. I'm talking something about this. Okay. Now here the roots are actually coming almost, roots कहाँ से जाते? They are actually gravity driven. Okay, they grow down inside the earth. Okay, but this is a completely different picture. Here you can see the roots that are coming outside and they are going in almost reverse direction. मैं इन roots की बारे में बात कर रही हूँ. Do you know about such roots? No, ma'am. Okay, fine. That actually has interested me. Okay. Ma'am, basically we have learned about this phenomenon that it is known as gravitropism, but we Oh, very good. basically Very good. actually haven't seen it. Okay, Oh, very good. Fine. It's okay, even if you have not seen it. When I saw it for the first time, for me, also maybe I was also very amused and surprised. जैसे किसी को एक सर्कस में कुछ जादू दिख जाता है ना, उसी तरीके से मुझे वो फीलिंग थी उस समय. Anyways, so these are the roots of mangrove forest. Most of the mangrove trees which are growing in this sort of estuarine ecosystem, they have these type of roots. Okay, now actually these are the secondary roots. जो मेन रूट्स हैं वो उसी तरीके से ग्रो करती हैं नेचुरली जैसे एक नॉर्मल ट्री में ग्रो करती हैं. ठीक है, बट because they are growing in the regions which is almost completely filled with water. ठीक है, it's saturated with water, so of course the soil is devoid of any proper oxygen or aeration. अभी उस केस में जो रूट्स हैं उनको तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही जो डीप डाउन जा रही है. सो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दोज रूट्स ने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया दो तरीके के फंक्शन में. वो रूट्स जो डीप डाउन जाएंगी ग्राउंड में, उनका काम होगा टू सिंपली गिव एन एंकरेज एंड सपोर्ट टू द ट्रीज. ठीक है, और एक उन्होंने रूट्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट कर दिए वो रूट्स हैं जो हवा से ऑक्सीजन लेंगी एंड दे विल रिलीज एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो मेन रूट ले रही है. तो मेन रूट का क्या क्या काम होगा? वो सॉइल से मिनरल भी लेगा और एंकरेज भी देगा. लेकिन भी उस मिनरल में तो ढेर सारा सॉल्ट है. इतना एक्सेसिव सॉल्ट अगर प्लांट में या ट्रीज में चला जाएगा, ट्रीज विल नॉट सर्वाइव. ओके, तो उन्होंने एक अडैप्टिव मैकेनिज्म डेवलप किया. व्हाट वाज दैट अडैप्टिव मैकेनिज्म? दे डेवलप सेकेंडरी रूट्स जो पानी के बाहर ग्रो करती हैं और इनका दो रोल होता है. एक तो वो ऑक्सीजन लेके है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई जो सॉइल में नहीं है उसको पूरा करती हैं. एंड सेकंड, यू विल सी दैट देयर आर सेवरल सॉल्ट डिपॉजिट्स. मैंने खुद अपने आंखों से देखे, उनके छोटे छोटे पोर्स के आसपास में है ना सॉल्ट के जो है बॉल्स तैयार हो जाती हैं. ठीक है, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो पेड़ में जाना चाहिए वो पेड़ में ना जाकर ये रूट्स अपनी तरफ डाइवर्ट करके उसको निकाल देती हैं.
So see, nature is so strong in creating these evolutions and adaptations in such a long period of time that plants can, that is how these species have created that wonderful mechanism with which they are able to grow in such a saline water as well. ठीक है, otherwise इतने saline water में किसी भी plant या vegetation का grow कर पाना possible नहीं है. But they had adapted themselves by growing these roots. इनको हम nematophores के नाम से जानते हैं. ठीक है, इन roots Yes, ma'am. right, right, ठीक है. So this is the speciality of the mangrove forest. Now ये roots अपने आप पे important है क्योंकि ये है ना आपके जो छोटे छोटे फिशेस हैं, क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, जो आपके मराइन इकोसिस्टम से यहाँ पर आ सकते हैं आराम से. They get good amount of habitat and home for their living, for their laying eggs, for their vegetation. And that is why they play a very important role in providing them a good habitation and a good biodiversity. That is why the estuaries or estuarine ecosystem are very, very important. समझ में आया बेटा? Is that clear? Yes, ma'am. So now let's understand what is the type of food chain that is working here. Okay. So ये तो एक larger दिखाया गया है कि इसमें snails और small fishes और cockles ये आपके fresh water system से आ रहे हैं, and your crabs and your marshes, insects and the shorebirds, they are coming, and the large fishes, they are coming from the from the marine ecosystem, and they are combining together to form this estuarine ecosystems. Okay. So इसमें एक proper example मैंने दिखाया है कि how this also varies with different zones. Okay. Now आपके जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनका भी लिमिटेशन है. ठीक है, वो एक डेप्थ तक ही, एक लिमिटेड डेप्थ तक ही है ना अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, एंड दे आर ऑलमोस्ट ऑन द फ्रिंज पार्ट. ठीक है, फ्रिंज पार्ट मतलब जहाँ पर बिल्कुल गहराई इतनी है कि रूट्स आराम से बाहर तक आ सकते हैं, और प्लांट्स जो है वो, ट्रीज जो है वो उनको बहुत शैलो डेप्थ मिल रही है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डेप्थनेस होगी देन दिस मैंग्रोव फॉरेस्ट वोंट बी एबल टू ग्रो. ठीक है, जो बिगनिंग का पार्ट है जहाँ पर स्टिल योर marine water is far from mixing, there the normal and usual vegetation will grow. Okay, so the wetland pool is the one where the fresh water is there. Salt flat का मतलब है कि the regions जहाँ से आपका पहला salt का है ना influence होना शुरू हो जाता है. A salt marsh is the region where properly the deposition of the salt starts taking place. Okay, and then comes a mangrove zone. This zone is almost near to the fringe of the coastal areas. That is why in India, आप जितना भी coastal area में जाओगे, whether you go to Goa or whether you go to Odisha, or you go to the Andaman Nicobar, everywhere you will find these mangrove forests are there. Okay. Then of course comes your intertidal mud flat and subtidal zone. Okay. So let's again understand what type of ecosystem, are there. So of course at your producer level you have marshes and mangroves and different phytoplanktons here, and different algae are there. At the consumer level, the first consumer level, or the in the second trophic level, is occupied by snails, cockles that are going to feed on these algae. Okay. The second, at the secondary trophic level, secondary consumer level, or the third trophic level, they will comprise of small fishes that are going to feed on snails or on these cockles, etc. And then there will be the trophic levels, higher trophic levels, where third consumer levels where large fishes होंगे, जिसमें कि आपके top carnivores होंगे, that those will be your ducks, your human beings, your kingfishers, herons, जो in large fishes को आके ही feed करेंगे. ठीक है. Now similarly with the crabs also. Now crab can feed on small fishes, they can feed on snails also, and then the larger fishes can also have those crabs, and these birds, they are also crabs. कौवे कितने ज़्यादा crabs खाते हैं कभी आप देखना, मजा आया. Anyways, that imagination might give a very creepy feeling, क्योंकि crab को imagine करके एक अजीब सा एक feeling आता है. But we shouldn't imagine in that way, because the nature had allowed it to evolve in that way, to create that shell जो कि बहुत अजीब सा लगता है देखने में, ताकि वो उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. उसको क्लॉज दिए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो प्रीडेटर्स उसको आके खा रहे हैं, it can protect itself. ठीक है. So this is how the estuarine ecosystem is there.
and this is a picture of an estuary. And so in India, if I talk about your estuarine ecosystem, so all those parts where the rivers are meeting, for example, your Sundarban Delta, in the coastal areas, you will find this estuary ecosystem. Okay, is it clear? Okay, and for the wetlands that I had already told you, okay, so मैंने ये अपनी slides इसमें add कर दी हैं, types थोड़ा सा types के बारे में information दे दिया है. Rest in the conservation के बारे में I'll discuss more in detail when we will discuss in the biodiversity, or when I'll talk about your Ramsar convention. ठीक है, जब मैं Ramsar convention के बारे में बात करूँगी then I'll talk. So this is the different wetlands in India, ठीक है, that had been recognized by Ramsar convention. Ramsar convention is an international body that recognizes the wetlands, and then they are considered as protected sites. ठीक है, फिर उसके बाद में उसके प्रोटेक्शन का जिम्मेवारी both international as well as national government का होता है कि वो किसी भी तरीके से खत्म नहीं होने चाहिए. They need to be protected. So the first wetland that was recognized was Chilka Lake. Okay. Okay, sponges. So when we will talk about conservation of wetland, I'll show you a video, or maybe जब आप लोगों का food tech के साथ में combine होता है, then probably I can show you the video so that both the departments can be combined. Okay. Anyway, so this finishes. So this actually now finishes your unit. Now there is one last small thing, like what are the services that are being provided by the ecosystem. So that I had already discussed you in unit 1, that how they are playing an important role as far the cultural system and cultural is concerned, in terms of providing raw materials is concerned, in terms of productive value, in terms of their consumptive value, in terms of their ethical and aesthetic value, in terms of cultural value, and so on. Okay, and once I'll discuss you about the religion, ethics, and cultural practices in unit 7, then we will understand this term more. Okay. So this finishes your unit ecosystem. So anyone has any confusion or any doubt here? किसी को बेटा कोई doubt? Okay. So if you won't have any doubt, then I'll discuss you the second aspect, that is how you have to answer the questions which are speech-based questions. Okay. Now it's since two times, means once this paper in 20 December and the one in this March 21. Now I have seen that on the similar pattern they are framing at least this one question there, where they will ask you to imagine yourself as a form of imagine yourself as a speaker, and that you have to means through your speech you have to actually create an awareness, or you have to motivate and inspire people, or you have to give it in a form of an information to your audience. Okay. So they will frame the question. For example, they will ask you that, okay, you are an environment, means you have a thorough knowledge on an environment, and as an environmental student, you have been asked on Environment Day to come between the people, means to address an audience, where you have to tell them about the significance of Chipko movement and covering various aspects on women empowerment, the involvement of the local people, and the social aspects. So they had asked in this way question. Okay. Now, and in another one, this question was asked in March. Okay. And then there was another question which was asked in December, where they had actually asked you that, okay, that your colony society approaches you, understanding your expertise on environment. They have asked you to and requested you to come to their club and address the problem of increasing air pollution, or maybe the plastic, something like that. Okay, and you have to write your speech in form of 250 words or 500 words, telling them about
दो एस्पेक्ट्स पे शायद से पूछा था, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। शायद से उन्होंने प्लास्टिक के बारे में पूछा था कि प्लास्टिक इज अ नेसेसरी इवल, इस पर आपको उन्हें बताना है। और दूसरा उन्होंने शायद से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, लाइक यू हैव टू मीन्स देयर इज अ नियर बाय इंडस्ट्री अराउंड योर कॉलोनी, एंड the colony committee, they invite you to aware or make people aware or address them around about the increasing air pollution, keeping in mind that industrial unit that is near to your colony. Okay. So now these type of now there it becomes important, even if you have lot amount of information, even you have gone through your entire subject, आपने अच्छे से learn कर लिया है, कर लिया, but it becomes bit different. It becomes bit different. बेटा, am I not audible? Okay, okay. अगर किसी को audible नहीं हो रहा है तो because so far as I'm seeing मेरे यहाँ तो ठीक है connection, केवल कुछ इन्फ्लुएंस है। अगर किसी को आवाज लगता है कि नहीं आ रही तो एक बार आप है ना क्लास के बाहर जाकर ट्राई टू कम अगेन इनसाइड। Okay, so now my question is, on that question, when such questions are going to come, how or what should be your approach in writing your answers? Please. प्लीज बोलो, क्या अप्रोच होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए? Ma'am, we should include more facts. या मुदिता, या बेटा? We should include more facts in our answer. Okay, good. Okay, your facts. Good, very good. Okay, so okay, it's about facts. Fine. And what else? And what else? Ma'am, basically, first of all, we have to understand that what is the question and how to basically what are the topics we have to enlighten whether it is a club or it is a society we are campaigning or whatsoever is the situation, and what is the topic. Then, ma'am, we have first of all we have to describe the topic. What is the topic? Like whatever is asked. So we have to basically like क्या हो रहा है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना पड़ेगा कि वो टॉपिक से स्टार्टिंग में कि कुछ भी जो भी हमारे दिमाग में कि सोसाइटी में जो रिसेंटली चल रहा है और वो उससे लिंक था, उसके बाद फिर वो टॉपिक से था और उस टॉपिक के क्या क्या मतलब मैम अगर वो कुछ ऐसा है कि एविल टाइप है या कुछ हमारे सोसाइटी के लिए एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है जो भी है, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और उसके बाद क्या उसको किस तरह से, और अगर उसके साइड इफेक्ट्स है तो उसको टैकल कैसे कर सकते हैं, जो रिसेंट मेजर्स हैं उनमें डेटा क्या कहता है, जैसे लाइक मुदिता ने कहा कि फैक्ट्स को इंक्लूड करेंगे, तो एक कंक्लूजन देंगे मैम इस तरह से, और जो भी हमारे नॉलेज है अभी जो हमने मतलब ईवीएस से जो भी गेन किया एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कि क्यों हमें क्यों ही करना है, तो मैम वो थोड़े फैक्ट्स वो सब मैम इट शुड इंटरप्राइज एवरीथिंग. Okay, very good. Okay, Pallavi tried to cover certain facts. Okay, fine. That we need to understand what is the topic and how we can address by putting the facts as being told by Mudita, and how we can relate them with the surrounding problem that has been mentioned in the question or has been asked to keep in mind while you are giving or writing the speech. Okay. So I'm giving the solution too. Yeah, right. Answering the question. Okay. Now, when you are answering the question, you have to imagine yourself as a speaker there, okay? And then you have to answer your question. Okay. Now I'm going to tell something in general. Okay. Anyone has to say anything else or express yourself? Okay, fine. Then I'll tell you something. Okay. Now, what happens is when the speech, when we are asked to give a speech, okay, say for example, forget about that you have to write. You are sitting somewhere, you are amongst a group of people, and then suddenly you are being asked, considering your expertise, okay, you have an expertise in this field, they may ask you, please, why don't you come and speak? Okay. So the very first thing is that when person approaches you, why is he or she approaching you? Why? They could have taken anyone else. Okay? Because the idea is to have information from you.
because they feel that okay, you are expert, you have greater information. So the idea here to call you is so that they can get or they can have an information from you. Okay? So first thing is that your purpose primarily has to be to uh, provide good information. Okay? Now second important factor is while you are giving an information, we have to keep 2 to 3 things in mind. First thing, information should be to to the line, means it should be focused, shouldn't be beating around the bush. Okay? And it should contain good data so that you can justify whatever you are saying, or so that you can support whatever you are saying. That helps in making people understand. And third is you can add some stories from your experience. Now, while mentioning the stories, the mistake that we often do is by exaggerating it. Okay? Or sometimes we try to frame or concoct something very imaginary. That shouldn't happen. And I'm very afraid that most of the time when the speeches are happening, especially by the political leaders, they will frame all sort of story. छोटी सी चीज होगी, वो इतनी बड़ी एक अजीब सा स्टोरी बनाकर आपको पेश करते हैं कि आप उसकी तरफ इमोशनल होने लगते हो, अरे यार कितना अजीब सा चीज हुआ. ठीक है, that shouldn't happen. ठीक है, although people think that such speakers are good, actually they are superficially good, but such speakers are very harmful. ये बिल्कुल कैंडी की तरह होते हैं जो खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं बट हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं. Okay, so your information should be good in terms of ethics also, that whatever data, whatever facts and whatever stories that you are presenting in form of your experience, they shouldn't be exaggerated, or they shouldn't be very मतलब बहुत ही नाटकीय जैसे कहते हैं ना, वैसे नहीं होनी चाहिए. It should be in a form of an information, straightforward and short and crisp. Okay, so your information, so this is an important when you are going as a speaker. Where is my voice breaking? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Mudita, see if you can because actually there is a lot of disturbances with the weather everywhere, so I'm sure with that there is lots of issues with the internet. Okay, so see if you can go, means you can come once again. Okay. Anyways, so so while I was discussing in my in my previous class, so there one student told voice modulation is very important, and actually she said something very right. Okay, and unfortunately it's been considered कि जिस speech में आप बहुत ही आवेग जिसे कि कहते हैं फोर्स के साथ में बोल रहे हैं, और when your voice is very loud, that is a good speech. No, unfortunately in our Indian cultural, means in the sort of culture we are living in, this type of speech and this type of speech makers are considered as very good, but outside if you go, this type of speech is very negative form, because it sends a very wrong message there. And they are able to understand your entire psychology and your body language with that, and they are able to understand that your speech is very shallow and it has no depthness and rest of reliability and reliability in terms of the data that you are providing. Okay, so there they are very sharp, because they understand the philosophical and psychological aspects when the person is delivering something, so they catch you immediately. But here in India, जो नेता माइक पर चिल्ला के हाथ उठा कर है ना अपनी स्पीच दे रहा है, या एनी पर्सन हु इज वेरी वोकल लाउड और बिल्कुल पॉलिटिकल टाइप में बोल रहा होता है, उसे है ना बहुत पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है. It's not so. Your calm and composed way of speaking and delivering something has a very positive impact. Okay, and even when you keep your speaking in a very normal way, then also it's very impactful. Okay, then also it can be made very impactful. Okay, our intention should be very clear. हमारा मोटिव क्या होता है जब हमें स्पीच दिया जाता है, कि हमें अपने ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करना है. ठीक है, और इस मोटिवेशन में हमारा इंफॉर्मेशन
पूरा चला जाता है, ठीक है। हमारे इंफॉर्मेशन का जो रिलायबिलिटी है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, दैट फिनिशेस, ठीक है। हमारा फोकस अब यही है कि हमें ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। और जनरली ऑडियंस को इन्फ्लुएंस हम कैसे करते हैं, उनको अपनी बातों से इमोशनली कनेक्ट करके। एक बार ऑडियंस आपकी अगर इमोशनली कनेक्ट हो गई, अगर आप गलत सच भी बोलोगे, दे विल एक्सेप्ट इट। And that is why our means the people, when they especially listen to the political people or the political persons or to the other speakers, they, rather than thinking and grasping things based on the information and thinking, okay, ये जो चीज़ बोल रहा है ये कितनी सही है कितनी गलत है, they become emotional towards it. And that is why most of the speeches given by the people are mostly emotional driven. Okay? So as a good listener also, you have to have that role that you ought not to emotionally connect yourself with the information of the speaker. ठीक है, उस केस में क्या होएगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, आप उसको एक पॉइंट ऐसा आएगा इमोशनल होने के बाद में, यू विल ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग. That becomes harmful. It will become like a sugar candy, which is very tasty to eat, tasty for your tongue, but very harmful for your health. You should constantly keep questioning. जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको क्वेश्चन करो. ओके, क्या ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है? You can either check it or think of it logically. अगर वो उसे डेटा से प्रूव कर रहा है, then it's best. That is why for a speaker it becomes necessary, whatever information they are giving, you justify it using data. और वो डेटा अगर आप सॉलिड है, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप उसको वैसे बोलो कि सी आई हैव एन अप्रॉक्सीमेट, मैंने कहीं ऐसा देखा था, एंड आई थिंक इट्स मोर और लेस, इफ somebody can please check and let me probably that. Or it's better that you have a sound information on that topic in terms of data, so that आपको कुछ भी गलत ना बोलना पड़े, ठीक है। उससे होगा क्या कि जो लिसनर आपकी चीज़ों को सुन रहा है, जो स्मार्ट है, वो अगर आपके डेटा से देखेगा और वो देखेगा कि नहीं आपने जो डेटा दिया है दैट इज राइट, उसका ओवरऑल इमेज आपके स्पीच के लिए चेंज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ दैट ट्रस्ट, एंड दे विल बिलीव ओके व्हाटएवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन यू हैव सेंट इज राइट एंड ट्रू. That automatically attracts and pulls the and influences the audience. वहाँ पर आपको ऑडियंस को बांधने की या जद्दोजहद करने की या है ना कहानियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। Stories play a very important role when you are providing information in terms of your experiences. When you are putting your experiences, don't exaggerate them, don't make them emotional, present exactly the way they had happened, ठीक है, and that actually makes it beautiful, ठीक है, उसको ज़्यादा strong करता है, ठीक है. So so these were the points when we keep in mind when we are writing, when we are speaking. Now एक फ्रेमवर्क होना चाहिए हमारे दिमाग में जो इन जनरल किसी भी टॉपिक के लिए होता है, या ऑलरेडी हमारे दिमाग में प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है. एंड जब हमारे दिमाग में वो फ्रेमवर्क रहेगा तो हम जैसे ही हमें कोई टॉपिक मिलेगा, हम उस टॉपिक को सोचकर आराम से अपनी इंफॉर्मेशन को उसमें फिट करके आंसर को लिख सकते हैं या आप बोल सकते हो whenever you are asked, ठीक है. Most of the time when we are given with a certain topic, what makes us fearful? Because that fear is because we don't feel ourselves confident कि हम बोल पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि यार हम कैसे इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन समेट पाएंगे, ठीक है. सो वी हैव टू बी, वो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है जब आपके पास में एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है. जो हमें चीज़ करनी होती है वो ये करना होता है कि कैसे हम उस इंफॉर्मेशन को लाइन वाइज अलाइन कर सकें, सो दैट व्हेन वी आर राइटिंग इट और व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट इट, इट इज स्मूथ, एट लीस्ट इट इज स्मूथ. सो वो फ्रेमवर्क और उस स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो चीज़ एक आना चाहिए, दैट इज योर गुड इंट्रोडक्शन, ठीक है. नाउ गुड इंट्रोडक्शन में इट शुडंट बी विथ अ वेग स्टोरी लाइक वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग टाइम बैक, और मदर अर्थ इज लाइक दिस, ठीक है. दैट्स नॉट अ गुड इंट्रोडक्शन, ठीक है. इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी वेग, ठीक है, शुड बी क्लोज टू दैट टॉपिक, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक चिपको मूवमेंट, ठीक है. अभी जब आप चिपको मूवमेंट ले रहे हो तो हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट से शुरू हो जाता है, ठीक है, मदर अर्थ एंड दिस, ओके. नाउ दैट इज अ वेरी वेग एंड अ क्वाइट a child way of writing your speech or your speaking your speech. आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स इन जनरल रखना है, बट आपको उस टॉपिक के आसपास रखना है. कैसे आप उस टॉपिक के आसपास रखोगे? कैच द वर्ड्स दैट आर देयर इन द टॉपिक. If it's Chipko movement,
एंड चिपको तो एक स्पेसिफिक इंसिडेंस हो गया तो ठीक है, आपको तो उसको प्रॉपर डेटा या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ही देना होगा. Now, movement is a bit general concept, okay? And what this Chipko movement is pertaining to, it's for the environmental movement. So your introduction should be bit on environmental movement. What is the significance of environmental movement? What is this environmental movement? Why is it important and how does it happen? And what is the factor that is making people to go for these movements? Okay, ये आपकी introduction में आएगा. And introductions shouldn't occupy most time or part of your writing. It should cover 10 to 12% of the entire matter or entire speech. Okay? After the introduction comes the matter, main body, which will include the information. ठीक, तो अभी जैसे यहाँ चिपको मूवमेंट है, तो आप चिपको को उठाओगे और चिपको के बारे में पहले आप बताओगे कि ओके क्या मूवमेंट था. एक बार अभी आपने जब इंट्रोडक्शन दे दिया तो लोगों की कंडीशनिंग हो गई हेड की ओके हम कुछ इससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं, हम कुछ इससे रिलेटेड चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं. ठीक है. नाउ आपके क्वेश्चन पेपर में चिपको मूवमेंट के लिए बोल दिया था कि आपको उसमें सोशल एस्पेक्ट, विमेन एम्पावरमेंट और लोकल पीपल का कैसे एम्पावरमेंट कर रहा है, इस एस्पेक्ट को ज्वाइन करना है. ठीक, तो आपकी जब इंफॉर्मेशन जो मेन बॉडी मैटर है उसमें आपकी इंक्लूड होगा, जिसमें आप पहले चिपको मूवमेंट को एज ए इंसिडेंस बताओगे कि कब हुआ था, किन लोगों ने किया था, कैसे हुआ था. ठीक, then you will, so when you are telling here how it happened, how it began, there you can put it in form of a story. ठीक है, वो भी स्टोरी कहाँ मतलब exaggerated फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बेसिस पे ही होना चाहिए, but in a way so that people can watch, can start framing images. okay, ऐसा हो रहा होगा, बिल्डर्स आए होंगे, उन्होंने फॉरेस्ट कट करने का कोशिश किया होगा, किसी एक महिला ने देखा होगा, उसको खराब लगा होगा, वो इमोशनली अपने आप को फील कर रही थी, तो उसने फिर अपने और महिलाएं दोस्तों के साथ में शेयर किया, तो उन्होंने फिर जाके जो लोकल एनजीओ या जो भी उनके गांव की जो मंडली थी उसमें जाके उस बात को रखा, एंड द थिंग्स हैपन. सो यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग हाउ वन स्टेप, हाउ वन बाय वन द इवेंट हैड टेकन प्लेस व्हिच एक्चुअली मोबिलाइज्ड दिस चिपको मूवमेंट. ओके, अब एक बार आपने चिपको मूवमेंट के बारे में बता दिया, नेक्स्ट पार्ट विल बी व्हाट वर द डीपर फैक्टर्स इन इट. ठीक, फॉर एग्जांपल जब एक औरत ने देखा होगा या किसी गांव की महिला ने या किसी गांव के लोगों ने देखा होगा कि पेड़ कट रहे हैं, क्या चीज उनके दिमाग में चला होगा जिससे कि उनको ये दिमाग में लगा होगा कि नहीं हमें पेड़ों को नहीं कटने देना है. ठीक है, यहाँ पर आपका डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, डीपर थॉट आ जाता है. हाउ? Of course they are not very well educated, or they have never have studied environmental sciences or environmental studies, so that they are aware कि अरे पेड़ों के कटने से कार्बन फुटप्रिंट इतना हो जाएगा, CO2 एमिशन इतना बढ़ जाएगा, या फिर दी ग्रीन हाउस गैसेस और बढ़ जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा. नो, देयर इज सम डिफरेंट एस्पेक्ट, एंड दैट इज मोर ऑफ caring instincts. Those caring, that care ethics is there. Okay, now what form of care is there? They're emotional towards those trees. They're emotionally connected with their trees. Why? Because they know that they are living with them. They feel it, that on those trees for the woods, for the twigs, for the resources. और उनको काटने का मतलब है कि वो resources चला जाएगा. So they are not seeing the tree. कि एक tree है, सामान देने वाली मशीन थी, वो चली गई. No, they feel it emotional. No, they are like our children. They were like our part of our family, and when they are being cut, it's like cutting some or killing some family member of their community. That thought brought that pinch amount of pain, restlessness in their head that mobilized people. That is the root for the movement. And that is the root for the movements which had instigated, which brings people at large. वहाँ पर उन्हें ग्लोबल वार्मिंग इन सब के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती, स्टिल विलेज के विलेज लोग जो है वो दौड़ कर आ जाते हैं, बिकॉज दे आर इमोशनली कनेक्टेड. Okay, so I was just reading this one note by a professor who was giving who has written something on care ethics, and it was so very influential. And there he actually associated it with the important role of women in movement. So there is a study where it was observed that most of the environmental movements, women have played a great amount of role. They had played a very important role. Okay, so what was the important role played by the women, or why, and what was the psychological reason for the women participating in this movement? It is because women are more emotional,
their nature has treated them, has made them more emotional, they are more caring, and those instincts naturally draw them, considering the plants, the vegetation, the trees as their own children or their mother. Okay? And when some damage is happening, they immediately feel it. Oh, ये तो हमारे ही ऐसा लग रहा है जैसे हमारी माँ के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में कुछ हो रहा है. And that is what mobilizes the movement. Okay, so in that terms you have to then justify, and that there you have to add your data that okay, who were the women participants in that movement, because the role of Sundarlal Bahuguna in the Chipko movement came very lately. Interestingly, before that एक गांव की कमेटी ने रोल प्ले किया, तो उससे भी पहले महिलाएं जो वहाँ की थी गांव की, like Gaura Devi and other members, they were more influenced with this event, and they were the root cause in making this movement a success, क्योंकि वो महिलाएं ही गांव गई और वहाँ पर उन्होंने दूसरी महिलाओं को बताया, जिससे कि वो लोग जुड़ती चली गई. ठीक है. The role of Sundarlal Bahuguna was he gave it a political voice, he gave it a global voice. ठीक है, क्योंकि वो मूवमेंट लोकल लेवल पे हो रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल एक है ना एक वॉइस दिए, जिससे कि वो ग्लोबली इन्फ्लुएंस हुआ और ग्लोबली लोगों ने उसको सुना. That was his role. Okay? So we have to then tell in that way, and then we can simultaneously parallelly tell the events. ठीक है, कि जैसे कि चिपको मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होकर एपिको मूवमेंट हुआ, चिपको मूवमेंट का ग्लोबली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि एनवायरनमेंट डे पे जो है शिकागो में और दूसरे कंट्रीज में ट्रीज को हग किया गया. ठीक है. सो यू हैव टू देन टेल दैट हाउ इट हैड इन्फ्लुएंस्ड people and how it mobilized and motivated and inspired people in every week of life. Okay. So आपकी ये मैटर मैनेज. सिमिलरली जब प्लास्टिक्स के बारे में पूछा गया या नेसेसरी ईविल, अभी होता क्या है कि नेसेसरी तो गया किनारे, ईविल उठाया और सारा प्लास्टिक के बारे में लिखा, प्लास्टिक ऐसे है वैसा है ये वो, and concluding remark was that we shouldn't use plastic. Not a good way of writing this, not a good way for a graduate student to write in this way. Okay. अरे पढ़ लो, उसने नेसेसरी ईविल कहा. आपको वहाँ पर प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस के बारे में नहीं लिखना है, आपको ऐसा बताना है कि किस तरीके से प्लास्टिक्स आपके लाइफ में एंट्री मारे हैं, किस तरीके से उन्होंने आपके लाइफ को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप उसके बिना या वो आपकी हर चीज़ में है. ठीक है. एंड इट्स ट्रू. आप ठीक है प्लास्टिक पॉलिथीन बंद कर दोगे, क्या वो सॉल्व हो जाएगा? अभी आप देखो, शैम्पू बॉटल्स प्लास्टिक, टूथपेस्ट प्लास्टिक, पैकेजिंग प्लास्टिक, बिस्किट्स, टी बैग्स, चाय पत्ती, चीनी का बैग, सब कुछ प्लास्टिक में आ रहा है. ठीक है. हाउ कैन वी अवॉइड दोस? ठीक है. अभी आप टॉफी लेके आते हो, अगेन द प्लास्टिक. ठीक. सैशेज, पाउचेस, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक. ठीक. बॉटल कैप्स, प्लास्टिक्स. ठीक. कैसे? बिकॉज प्लास्टिक हैज एंटर्ड इनटू आवर लाइफ. ठीक है. एंड दे एक्चुअली हैज सपोर्टेड अ लॉट. ठीक. उसके साथ में प्रॉब्लम यही है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और वो वेस्ट को इंक्रीज करता हुआ जा रहा है. तो यू हैव टू आंसर और यू हैव टू राइट योर आंसर इन दिस वे. ठीक है, कि हाउ it has become a problematic and what can be a sensible solution. Don't use plastic is not the right answer. Your answer should be कि we have to segregate. ठीक है. जहाँ हमारे लिए जहाँ जहाँ पॉसिबल है कि हम उसको बिना यूज किए कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक पॉलीथीन यूज नहीं करना. यस, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक पॉलीथिक्स. राइट. ठीक है. या फिर हम जैसे हम चीनी जो है वो पैकेट्स में लेके आ रहे हैं, rather than we can buy sugar in open, जहाँ पर ओपन ग्रोसरीज में खुले मिलते हैं. बिग बाजार में आजकल खुले मिलने लगे हैं. सो यू कैन लाइक पिक योरसेल्फ, यू कैन मेजर एंड यू कैन टेक योर ओन होम बैग और ऑलरेडी यूज प्लास्टिक बैग जिसमें कि आप वो चीनी भर के ला सकते हैं एंड सो ऑन. ओके. And those which are microplastics, for example, your shampoo bottles, what you can do is you can segregate them and you can send it to the units where they can be recycled. ठीक है. So इस तरीके से आपको पॉसिबल, या फिर आपको ऐसे पैकेजिंग पे फोकस करना है जो आपके रिन्यूएबल पैकेजिंग को यूज कर रहे हैं, आप उनसे वो आइटम्स खरीदें. ठीक है. सो दैट शुड बी द वे ऑफ आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इन अ वे ऑफ पुटिंग योर क्वेश्चंस. ठीक है. The last part of your speech or your anyway, whether you are speaking or whether you are writing in a form of speech, should be a conclusory remark. Now, when you are concluding, always remember it should be, even if the topic is negative, it should bring some hope from it. Okay? Even if this thing is happening, but these things have already started taking place, and we hope that in coming times the problem
can be resolved if we take promise, if we take vow, if we motivate our youngsters, if we create awareness and so on. ठीक, it shouldn't be very hopeless, it shouldn't be negative. ठीक है, और उस कंक्लूडिव रिमार्क के भी दो पार्ट्स होते हैं. लास्ट वाला तो आपका हो गया पॉजिटिव मैसेज, और उसके पहले होगा एक ब्रशिंग कि आपने पूरे स्पीच में क्या कहा. So then you can say कि so I would like to conclude that as I had begun, what is an environmental movement, what is the significance of environmental movement, what are the factors that influence any movement, how the social movement turns into an environmental movement, and that is how the social, environment, and economical, these are not the segregated bodies but they are interconnected. Then we discussed about the Chipko movement, when it happened, how it happened, different lines of events, what are motivating factors, and the concept of care ethic. And at last, I would like to say that okay, these things are happening or have already started happening. Even though there is immense amount of cutting that has been taking place, but there are a lot of people who are very aware, or they are very sensitive enough in to avoid cutting off trees, etc. So we need to motivate ourselves. We have to keep in mind that we can also take this step and so, and this is and in that way you can conclude with a positive remark. So this is a general way. So if anytime, even if somebody asks you to speak in general in front of audience, by having this structure in your mind, by having an amount of information, you can quickly feed and segregate कि ठीक है आपको ये वाला information introduction में देना है, ये वाला information आपको information के main matter में देना है, फिर आपको conclusive remark देना है, आपको ये data डालना है, ये experiences डालना है, and your speech immediately will get ready, at least in your head, in 5 to 10 minutes of time. Okay, is it clear? Is there any question? किसी को कुछ No, डिस्कस ma'am. करना है, कोई डाउट है तो मुझसे बात तो मुझे बोल सकता है वो. Okay, so I think it's already 11:57. I'll immediately take your attendance so that you can leave for the next class.